By the end of every video, there will be a worksheet that you guys need to perform or you need to complete, and then send us a picture of completed worksheet. Okay. The first topic that we are going to start with is photosynthesis. I'll be making small clips regarding the topic. The chapter is nutrition in plants. आप लोगों को बुक भी साथ साथ फॉलो करनी है. जब आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होने वाला वो फंक्शन है जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट एंड ऑब्जर्व कि व्हाट डू एक्चुअली दे नीड टू प्रिपेयर देयर फूड. एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, सो विल जस्ट बी मेकिंग अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स बेटा. एक तो ये कि जो सॉइल है वहाँ से it will be uptaking water for the synthesis of its food material, and the second thing that it needs for the preparation of food is carbon dioxide from the atmosphere. Plants के पास small pores होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. They are responsible for the intake of this gas which is present in atmosphere, which is known as carbon dioxide. दो अहम बातें जिससे मैं जो है वो बेसिक इसको स्टार्ट करूँगा. पहली चीज़, पहला कंपोनेंट, पहला पार्ट इसका एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी सिंपल. इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एडेड अप विद वाटर producing C6H12O6, that is the food, and oxygen. But this reaction is not balanced. अगर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो, so I actually need 6 units of carbon dioxide, 6 units of water, and I'll be producing 6 units of oxygen. That's how it is balanced. Plant का जो मेजर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, that food is actually the glucose. और हम ही जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स लिबरेट कर देते हैं when they are doing the process of photosynthesis. The very major factor that is involved in this process is sunlight. Because without the source of energy, it cannot perform this function. अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे स्ट्रक्चर्स को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है. Where you are counting carbon dioxide as a smaller molecule, H2O as a smaller molecule, and you are forming C6H12O6 as a larger molecule. Any such chemical process in which two smaller molecules or more than two smaller molecules are joined together to form a one large molecule is known as, it is a part of metabolism and it is known as anabolism. So photosynthesis is an anabolic reaction. मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड joins with water in the presence of energy forming C6H12O6 and releasing oxygen. Energy is provided by
by light mainly from sun. That's what photosynthesis is. There were multiple experiments that scientists took to prove that plants absorb water from their roots. There were multiple experiments that proved that plants absorb carbon dioxide from the atmosphere. And then there are multiple experiments that prove that they liberate oxygen, and without absorbing sunlight the process is not possible. The main reason behind absorbing sunlight is energy, and the main component which helps in absorption of sunlight is chlorophyll. So this process cannot be performed without light that is absorbed by the help of क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट की बॉडी के अंदर, यानी कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं जो कि लीफ में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, उन सेल्स के अंदर मौजूद एक कंपोनेंट है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट मौजूद होता है जो कि बेसिकली हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन. ठीक है. अच्छा जी, हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर मैं दो पार्ट्स के नाम बताऊं आपको, द फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन and the second one is dark reaction. Light reaction is the process which is occurring in the presence of sunlight, and the dark reaction is occurring in the absence of sunlight. जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं. ये मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ और टर्मिनोलॉजीज में इसकी बाद में मेंशन कर दूंगा. ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. और इनके बनस्बत या इसके साथ जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, दोज हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे नीड टू obtain food from other organism, other living or dead organic bodies, they are known as heterotroph. And when any organic body, any living body which can produce their own food, यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक बॉडी जो कि ऑटोट्रॉफ हो और अपना खाना खुद बना सकती हो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से, that particular body or that particular organism is known as photoautotrophic organism, and that type of nutrition is known as photoautotrophic nutrition. इसी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाया जा सकता है, बल्कि ऑर्गेनिजम्स डू मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए से जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एंड द न्यूट्रिशन is known as chemoautotrophic nutrition. But right now we need to discuss about nutrition in plants, and specifically we are talking about photosynthesis, so we'll stick to it, that the main nutrition that is occurring in the plant body, which is photosynthesis, produces sugar. And this sugar actually helps in the processing of energy, not just in the body of plant but also in our body. Any animal who is eating a plant body, कोई भी देखो, energy can neither be created nor be destroyed. It is only changing its form from one form to another. You guys all know this. तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, इसके अंदर होता ये है कि सनलाइट की जो एनर्जी है, जो कि सनलाइट से हमारे पास आ रही है, जो कि बेसिकली इस लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिसमें वो प्रोसेस बेसिकली आपके पास एनर्जी को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है.
वो एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड प्रिपेयर करने में। इसी एक रिएक्शन का, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, उसी का आपको एक डिटेल फॉर्मेट बताता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लाइट रिएक्शन. Light reaction is also known as light dependent reaction. So when we are talking about light dependent reaction, इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स आ जाएंगे. एक इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी और उसको बैलेंस किया था. एक इक्वेशन जो है वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसी के हवाले से. इसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट आ जाएगा आपके पास वो यही है कि द बेसिक सोर्स इज सनलाइट ना. सो विल स्टार्ट फ्रॉम सनलाइट, और simply I'll say it, or I'll call it light energy, because it's not like it's always has to be the sunlight. The source has to be the sun. It could be any source. We need light energy to be there. This light energy is absorbed by chlorophyll, and the chlorophyll is responsible to convert it into chemical energy. Chlorophyll is converting it into a form of chemical energy. Sunlight, which is absorbed by chlorophyll, is converted into chemical energy. And when you're talking about this chemical energy, ये अभी आगे हमारे काम आएगी. हम इसको एक साइड पर रखते हैं. इसी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर आपके पास एक दूसरा एलिमेंट शामिल होता है. इट्स पार्ट बी, जिसके अंदर वी आर टेकिंग 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. We are taking 12 molecules of H2O, and these molecules are actually broken down. आप तोड़ेंगे कैसे इसको? आप तोड़ेंगे लाइट की मदद से. एंड लाइट इन बायोलॉजी और इन साइंस इज़ नोन एज फोटो. तोड़ रहे हैं हम वाटर को, H2O को, और तोड़ने के प्रोसेस को बायोलॉजी में लाइसिस कहा जाता है. सो वी आर डूइंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, द फोटोलाइसिस ऑफ H2O. ये सारा का सारा रिएक्शन एंजाइमेटिक होगा, और इसके अंदर यू विल बी प्रोड्यूसिंग 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 24 हाइड्रोजन. मैं दोबारा से रिपीट करते चलूँ. हमारी बात शुरू हुई थी फोटोसिंथेसिस से. हमने कहा फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड with water in the presence of light produces food that is carbohydrate, liberating a gas which is oxygen. Photosynthesis was then divided into two parts. One was the light reaction and the other one was the dark reaction. हमने यहाँ तक दो reactions पढ़े हैं. Both of them were the part of light reaction. ठीक है. हमारे पास इस पूरे सिनेरियो के अंदर 3 प्रोडक्ट्स इस वक्त तक आ चुके हैं. हमने वाटर मॉलिक्यूल के 12 यूनिट्स लिए, उसके अंदर 6 ऑक्सीजन और 24 हाइड्रोजन बनाए. 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाए बिकॉज O2 है, और 24 हाइड्रोजन एटम बनाए, सिंगल हाइड्रोजन एटम, और साथ में बनाई केमिकल एनर्जी. ये सारा का सारा काम हो रहा है लाइट की मदद से, इसलिए हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं. जो हम दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. So when you're talking about light independent reaction, जब आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो बात आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की. We'll be taking 6 molecules of carbon dioxide CO2, and by the help of enzyme controlled reaction हम इसको कन्वर्ट करेंगे 6 with carbon, 12 with
hydrogen and 6 with oxygen. That is known as glucose. So we'll be converting this carbon dioxide into glucose. Obviously we need to add energy into it. So here comes the energy into this reaction, and we need to add हाइड्रोजन इनटू इट. हियर कम्स द हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और कार्बन दोनों इसके पास है. हाइड्रोजन हमने दिया और हमने ऑक्सीजन यहाँ पर जो था. अब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें फिर दोबारा से मैं वही कहूँगा कि ये जो 6 है आपके पास, ये O2 के साथ लगा हुआ है. यहाँ पर सिर्फ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं. 6 × 2 = 12, टोटल 12 हो रहे हैं, यानी कि 6 अभी भी रेमिनेंट है, रह गया है. ठीक है. साथ ही साथ मैं कहूँगा कि यहाँ से आपने 24 हाइड्रोजन एटम दिए, तो यहाँ पर आपने जो यूज़ किया वो 12 है. 12 यहाँ पर अभी भी रहते हैं. ये साथ में इस चीज़ को बैलेंस करते हुए प्रोड्यूस करेगा H2O. H2O के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे अगर बैलेंस किया जाए? एग्जैक्टली 6 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. 6 ऑक्सीजन रह गया है और 12 हाइड्रोजन रह गए. सो 6 × 2 = 12. 12 हाइड्रोजन यहाँ पूरे हो गए. 6 × 1 = 6, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर पूरे हो गए. मैं अगर इसी रिएक्शन को दोबारा से समराइज करूँ तो अब पहले के मुकाबले रिएक्शन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हाँ उसी को बैलेंस भी करेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएंगे. हम लोगों ने 6 कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट लिया. 6 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में वी एडेड 12 यूनिट ऑफ H2O. 12 यूनिट ऑफ H2O के साथ हमने जब ये रिएक्शन किया तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए हमने यूज़ किया 2 एलिमेंट्स को. सो आई हैव टू राइट दीज 2 ऑन द एरो. वन इज़ द क्लोरोफिल एंड द अदर वन इज़ लाइट. हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो यूज़ दोनों ही चीज़ें हो गई. और इसके अंदर आपके पास प्रोड्यूस हुआ C6H12O6 along with 6O2, 6 oxygen molecules and 6H2O. अच्छा जी, जो पहले हमने रिएक्शन लिखा था उसमें यहाँ पे 6H2O नहीं आ रहा था और ये भी 6 यूनिट थे. तो अगर मैं इसको इसी तरह से बैलेंस करूँगा, यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, यहाँ के 6 को यहाँ से के 6 से कैंसिल आउट कर दूँ. सो इट वुड बी 6 कार्बन डाइऑक्साइड along with 6H2O producing the same element with chlorophyll and the light energy C6H12O6 with 6 oxygen molecules. So this is the finalized reaction of photosynthesis. I guess ये कंप्लीट वीडियो आपको एक जर्नल सा क्विक सा रिव्यू भी दे देगी अगर आप इसी को दोबारा से देखेंगे that what actually the reaction is. So we will be having a worksheet regarding this reactions, and for the next video I'll be discussing about the further components of photosynthesis. Thank you, take care, and Allah Hafiz.